Hello everyone, Neha this side from BComHons. In this video lecture, I'm going to tell you about royalty. This chapter we studied in BCom Honors first year. So what we look in royalty, so we understand the meaning of royalty, types of royalty, their merits, demerits, and after that, after having all the theoretical part, we will look after numerical or royalty. So in this picture, what you have seen, in this picture, you will see there's a person who gives books to the another person, and giving books to the person, he receives royalty against the use of the books, right? So in royalty, we will cover the meaning of royalty versus rent, important terms, accounting procedures and journal entries, and then numerical on royalty. What is royalty? Royalty, it is the amount which is payable to a person in respect of the use of an asset, whether hired or purchased from such person, calculated with reference to and varying with quantities produced or sold as a result of the use of such asset. In example, like mine and oil well. So on my left side you have Mr. X, and on my right side is Mr. Y. Mr. X, who is owner or lessor of the company, and Mr. Y is lessee. So what happened between these two parties? Mr. X is giving right to use of his asset to Mr. Y. In exchange, Mr. X gives royalty to Mr. Y gives royalty to Mr. X, right? So the royalty क्या होता है? Royalty, it is that amount which is given by a lessee to a lessor. For example, in this we have taken another example in this slide. So there is a book, and the author of book is known as lessor or author, gives right to print and sale of his book to publication house. Publication house, who is publication house? Publication house is a lessee, and publication house gives royalty to author of that book. Hope you all are clear with the meaning of royalty. So basically, royalty, it is that amount which is given by a lessee to a lessor. Why lessee given amount to lessor? Because he uses his rights of property, and that's why he gives royalty to the lessor. Moving towards our next slide, which is royalty versus rent. So rent is considered as payable for use of some tangible assets. Now question arises, what is tangible assets? Tangible assets are those assets which we can see and touch. For example, rent of building, land, etc. And what is royalty? Uh, Royalty is consideration payable to the owner for the use of special right in tangible and intangible assets. So if I differentiate between these two terms, we simply differentiate by royalty. In royalty, we use rights in a tangible and intangible assets. But if we talk about rent, the rent is used for intangible assets only. Basis of payments, rent is usually payable according to time as per year, per month, per week, and per day. But payment of royalty depends on production or sales. So rent, we can pay rent on monthly basis, on a yearly basis, on per week, on or per day, right? But if we talk about royalty,
तो रॉयल्टी डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन और सेल्स, विच मीन्स जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा सेल होगी, उसको क्या है, रॉयल्टी दी जाएगी. नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स पे क्या होते हैं, रॉयल्टी का अमाउंट डिसाइड होता है. देन टाइप ऑफ रॉयल्टी. The royalty can be divided into three types. First is copyright, mining, and patent. Copyright means copyright provides a legal right to the author who of his works, right? The photographer for his photography or any such kind of intellectual works. So copyright royalty is payable by the publisher who is lessee of a book to the author who is lessor of that book or to the photographer based on the sales made by the publishers. अभी मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको यही बताया था कि रॉयल्टी जो है वो हम किस पे बेस्ड करते हैं. रॉयल्टी कैसे दी जाती है, रॉयल्टी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स मेड बाय द lessee, right? And mining royalty, so lessee of mining or quarry pays royalty to lessor of the mine or query, which is generally based on the output basis. Patent royalty क्या होता है, तो patent royalty is paid by the lessee to lessor on the basis of output or production of the respective goods. Important terms. In important terms, we look the first, lessor. So lessor is a person or who is obviously owner of the property who receives a royalty for giving a special right for using his property to other person. While lessee is a person who pays royalty for acquiring a special right for using other property. Then come to next slide, which is minimum rent and short working. So minimum rent is also known as fixed rent, flat rent, dead rent. Why it is called as fixed rent? Because minimum rent is fixed by the lessee. It is fixed by the government, which is paid by the lessee to the lessor in case of shortage of output or प्रोडक्शन और सेल्स. यानी कि जिस भी साल प्रोडक्शन या आउटपुट या सेल कम रहेगी, उस साल हम रॉयल्टी ना देके क्या देंगे, लेसर को हम देंगे अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, ठीक है, जो कि फिक्स किया जाता है. It means lessor will receive a minimum fixed rent irrespective of the reasons of the shortage of production. शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग का मतलब, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, काम, ठीक है, कम, और वर्किंग का मतलब होता है काम. तो जिस भी साल कम काम हुआ है, उस साल हम क्या देते हैं, उस साल हम देते हैं अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट. And the payment of royalties based on the unit of output produced. However, if the sum of royalty is less than the minimum rent, then the payment will be based on minimum rent. Hope the meaning of minimum rent is clear to all of you. For example, in 2000 year, minimum rent is fixed in all the years, right? And in 2000, let's say example, in 2003, minimum rent is 1 lakh and the amount of royalty is 60,000. So in this case, what amount is given to lessee? तो lessee को जो amount दिया जाएगा, that is minimum rent. Reason behind, because in this year the amount of royalty is less than the amount of minimum rent. That's why we will give the amount of minimum rent to lesser so that he cannot suffer the loss of shortage of production, right? Then recoupment of short working. For example, recoupment. What do you mean by the term recoupment? Recoupment means recover, right? Recover of short working, यानी कि जिस भी साल आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, उस साल आपने क्या किया है, उस साल प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा हो गया आपके मिनिमम रेंट से. तो क्या होगा उस साल, तो जिस भी साल आपकी शॉर्ट वर्किंग हुई थी, वो नेक्स्ट ईयर के सरप्लस से क्या हो जाती है, राइट ऑफ हो जाती है. अब इसमें देखते हैं, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड रिकवर द अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट फ्रॉम लेसी. समझ रहे हो,
जिस साल रॉयल्टी आपकी कम होगी मिनिमम रेंट से, तो उस साल क्या जाता है, लैंड लॉर्ड यानी कि जो लेसर है वो रिकवर करता है अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, उसको मिनिमम रेंट दिया जाता है लेसी के द्वारा, राइट। इन सच केस शॉर्ट वर्किंग इज लॉस टू लेसी, तो उस केस में क्या हो जाता है, लेसी को लॉस हो जाता है, क्योंकि लेसी ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है ना, अपने पास से दे रहा है वो। अगर मैंने बोला 2023 में रॉयल्टी 60,000 की, तो मिनिमम रेंट 1 लाख का है, तो लेसी कितना पे करेगा, 1 लाख लेसी पे करेगा, 1 लाख किसको, लेसर को। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि वो ज्यादा 40,000 को ज्यादा पे कर रहा है लेसी, है ना, तो वो रिकवरी कब होगी, तो वो रिकवरी होती है जिस भी साल सरप्लस होता है। तो ये कंडीशन डलवाई जाती है इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड फ्रॉम सरप्लस इन फ्यूचर ईयर, कि जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होती है उस साल उसके नेक्स्ट ईयर जो भी सरप्लस होगा उससे वो रिकवर कर ली जाएगी। दिस इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। लेट्स से इन दिस वी हैव टेकन एन एग्जांपल, 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में आपका जो मिनिमम रेंट था, सपोज करिए वो 1 लाख था, एंड आपका जो रॉयल्टी थी वो थी आपकी 60,000, राइट। अब मिनिमम रेंट तो फिक्स होता है, तो 2024 में भी मिनिमम रेंट फिक्स रहेगा यानी कि 1 लाख। लेकिन हो सकता है कि 2024 में रॉयल्टी आपकी बढ़ जाए, तो आपकी रॉयल्टी सपोज करके बढ़ गई 2 लाख की, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको 2023 में कितने का नुकसान बियर किया था लेसी ने, 40,000 का, तो जो 40,000 का लॉस बियर किया था, अब 2024 में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का सरप्लस हो रहा है उसको, रॉयल्टी कितनी है 2 लाख की, मिनिमम रेंट कितना है 1 लाख का, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसको, कितने का सरप्लस हो रहा है 1 लाख का। तो जो 1 लाख में से जो 60,000 का नुकसान हुआ, 40,000 का नुकसान हुआ था किसको, लेसी को, रिकवर हो जाएगा ना। तो यही होता है आपका रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। लेकिन इसकी कंडीशन हम तभी पैसा रिकवर करेंगे अपने सरप्लस में से, जब कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन मेंशन की जाएगी कि जिस भी साल आपकी शॉर्ट वर्किंग होती है वो सरप्लस से रिकूप कर ली जाएगी। Then accounting procedure में in the books of lessee we prepared 3 accounts. First is royalty, landlord and short working. On the basis of 3 conditions, we have prepared these 3 accounts: royalty, landlord, and short working. What are these conditions? So these are when the amount of royalty is less than minimum rent, when the amount of royalty is greater than minimum rent, when royalty is equal to minimum rent. Now in the next slide, we will have some journal entries for royalty. So in this, you will see where there is no royalty in the year, जिस भी साल कोई royalty नहीं होती है, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, minimum rent account debit to landlord. Then second entry is short working account debit to minimum rent. जिस साल आपका रॉयल्टी कम होता है मिनिमम रेंट से, और ये बोला जाता है कि शॉर्ट वर्किंग आपके नेक्स्ट ईयर रिकवर हो जाएगी, तो उस साल क्या कौन से एंट्री होंगे, उस साल सबसे पहले एंट्री होगी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, देन रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट to minimum rent, then landlord account debit to bank, and profit and loss account debit to royalty. Royalty का amount जो है वो profit and loss account में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं. When short working are recouped, तो royalty account debit to short working account to landlord account debit to bank account. Transfer of irrecoverable short workings, तो हम जो है वो शॉर्ट वर्किंग को जब हम रिकवर कर लेते हैं तो उसका अमाउंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट. So these are the journal entries where you see the different cases, like when royalty is less than minimum rent तो क्या एंट्री होगी. So these are the entries. ये मैंने पहली वाली स्लाइड में डिस्कस कर दिया है. When royalty is equal to more than minimum rent, इक्वल टू और मोर देन मिनिमम रेंट में क्या होगी, तो ये वाली एंट्रीज हो जाएंगी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल do some numerical which is based on numerical. Thank you so much, and hope you all have clear the meaning of royalty. In next lecture we will see some numerical on royalty. Thank you so much and have a nice day.